students, today we will continue examples of points of inflection. First example beta, show that y equal to a square x upon a square plus x square a greater than 0. Okay, has 3 points of inflection. Beta, in my last video we discussed working method of point of inflection. ठीक है बेटा, and some example मैं बेटा in my last video. Next beta we continue examples. First beta derivative dy upon dx. Okay, denominator the square beta. Denominator into 1 minus x into 2x. Okay beta, a square into a square minus x square upon a square plus x square the whole square. Next beta second derivative a square. Okay beta, denominator the square beta, denominator derivative of numerator minus numerator derivative of denominator. Okay beta, so a square plus x square अपने कॉमन कर ले बेटा इसको, and 2x भी. Okay, माइनस भी बेटा. So we have बेटा देखो a square plus x square कॉमन आ गया, 2x कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया. So we have a square plus x square. Okay, कॉमन कॉमन प्लस 2a square minus 2x square upon a square plus x square the power 4. So we have minus 2a square x and 3a square minus x square upon a square plus x square the power 4. Okay बेटा, सॉरी क्यूब कैंसिल हो गया. सो माइनस बार बेटा की आ गई वैल्यू मिल रही डबल डेरिवेटिव. दिस वन इक्वल टू 2a स्क्वायर x इंटू x स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर द पावर क्यूब. सो 2a स्क्वायर x इंटू x माइनस रूट 3a x प्लस रूट 3a अपॉन a square plus x square the cube. Okay beta, this one equal to 0. Okay, so we have a positive beta, x 0, x the value root 3a and x the value minus root 3a. So this one is the possible points of inflection. So we check. First, x equal to 0. Okay, if x less than 0, beta in left neighborhood of x, if we x less than 0, okay, then double derivative beta, negative and positive, okay, upon positive. So this one is positive because negative this one because left neighborhood very small value beta. If x greater than 0, d square y upon dx square, positive, negative, positive. Okay, की आ गया बेटा नीचे द पॉजिटिव ही है, नेगेटिव. सो चेंज साइन, सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x इक्वल टू 0 की आ गया बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. नेक्स्ट x इक्वल टू रूट 3 है बेटा, x equal to root 3a. First, x less than root 3a. Double derivative. Beta less than. Negative, positive, positive. Negative beta x less than root 3a. Negative, positive, positive. If x greater than root 3a, then double derivative. Beta greater than positive, positive, positive. So this one is positive. So also point of inflection. X minus root 3a. First
x लेस देन माइनस रूट थ्री है। फर्स्ट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सो वैल्यू की आ गई बेटा पॉजिटिव। इफ x ग्रेटर देन माइनस रूट थ्री है नेगेटिव। सो बेटा ऑल पॉइंट्स आर की आ गए पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। बेटा सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 बेटा। Example second. Okay, beta. If fx equal to, if जब y equal to ax cube plus 3bx square, ax cube plus 3bx square. Okay. Find a and b. Find a and b. minus 1 2 minus 1 2 as point of inflection of this function, as point of inflection। बेटा अपने point of inflection given है। बेटा point of inflection की ਹੁੰਦਾ बेटा जिਵੇਂ साइन ਦਾ ग्राफ बना लिया तुमने। ओके, this point this point this point this point, all points की है points of inflection। एक इससे अप्लाई कर रहा बेटा कर्व के ऊपर, तक कर्व ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ बेटा ਸੈਟੀਸਫਾਈ। ਸੋ -1 2 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਦਾ ਕਰਵ बेटा। ਮਾਈਨਸ ਇਹਨੂੰ ਫਰਸਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ, -1 2 ਲਾਈਜ਼ ਔਨ 1। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ बेटा ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ बेटा ਕਿਸ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਵ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ ਤੇ ਕਨਕੇਵ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾਂ ਕਨਕੇਵ ਡਾਊਨਵਰਡ ਤੇ ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦਾ that point is called point of inflection। so put in this one y2 minus a plus 3b। okay बेटा नंबर 2। सेकंड बेटा डेरिवेटिव कर लो, dy upon dx equal to 3ax के 6bx। नेक्स्ट 6ax plus 6b। okay बेटा this one equal to 0, double derivative। so 6ax equal to minus 6b, ax equal to minus b। okay बेटा अपने x की वैल्यू की आ रही है माइनस b पौन है, अपने इक्को वैल्यू आ रही ना, इन्हें कहता भी यह की है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सो x की वैल्यू कितनी है बेटा -1। सो a किसके इक्वल आ गया बेटा b। पुट इन सेकंड 2 इक्वल टू माइनस a प्लस 3a। okay 2a equal to 2, so a equal to 1, b equal to 1। if -1 2 is a point of inflection, so we have a the value 1 and b is also equal to 1। example number 3 beta। example 3, find the point of inflection of the function x equal to log y the power whole cube। okay बेटा अपने points of inflection कैलकुलेट करने हैं बेटा इससे। so बेटा two methods, first dx upon dy d square x upon dy square equal to 0, then solve बेटा। next बेटा you change in first x the power 1 by 3 equal to log y, so y equal to e the power x the power 1 by 3। okay बेटा so first dy upon dx। okay बेटा y this one dy upon dx e the power x the power 1 by 3 into 1 by 3 x the power minus 2 by 3। okay बेटा next d square y upon dx square 1 by 3 x the power minus 2 by 3। okay first
derivative of second plus second derivative of first minus 2/3 minus 5/3. Okay बेटा, minus 2/3 minus 5/3. Okay, so 1/3 minus 5/3 common, x 1/3 common. We have बेटा देखो मैं इस चो कॉमन निकटा x की पावर minus 5/3 and 1/3 also. Okay, then we have x the power 1 because minus 1 plus 1 beta x the power minus 5/2 common कर ले, x the power minus 2/3 minus 2. So 1/9 x the power minus 5/3 e the x the power 1/3 x the power 1/3. Okay, minus 2. Okay beta, so this one equal to 0. We have this one equal, क्योंकि exponential function is always positive, x minus 5/3 0 x 0. Okay, next x 1/3 equal to 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 8. So we have 2 points of possible points of inflection. So first x less than 0. देखियो बेटा, first we check less than 0. Negative, negative. So positive, x greater than 0. Positive, negative. Okay, next. At x, the 1/3 less than 2 means x less than 8. Okay, x less than 8. Then negative, positive. So d square y upon dx square negative. If x is 1/3 greater than 2, positive, positive. So positive. Sign की हो रहा है change बेटा. So अपन को दोनों की है बेटा points of inflection. Put in 1. X equal to 0. Put in 1. Y equal to 1. Okay. So 0 1 की आ गया point of inflection. X equal to 8. Put in 1. Y equal to e the power 8 2. ठीक है. So 8 e square की आ गया बेटा next point of inflection. Next बेटा, show that next example number 4 बेटा, show that abscissa of the point of inflection. बेटा abscissa of the point of inflection abscissa means x beta, point of inflection on the curve x equal to a minus b cos theta, y equal to a theta minus b sin theta is a square minus b square upon a. बेटा अपने प्रूव करना है. Show that abscissa of the point of inflection of the curve x equal to a minus b cos theta, y equal to a theta minus b sin theta is a square minus b square upon a. So first ठीक है बेटा, इसमें 1 कंसीडर कर ले. फर्स्ट dx upon d theta, b sin theta, dy upon d theta, a minus b cos theta. Okay, so dy upon dx, dy upon d theta, dx upon d theta, a minus b cos theta upon b sin theta. Number 2,
ओके बेटा, सेकंड डेरिवेटिव बेटा, ओके, a माइनस बी कोस थीटा अपॉन बी साइन थीटा। नेक्स्ट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी साइन थीटा डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर बी साइन थीटा माइनस a minus b cos theta into b cos theta. So we have b square sin square theta minus ab cos theta plus b square cos square theta upon b square sin square theta. B square sin square theta plus cos square theta 1 minus ab cos theta upon b square sin square theta. So d square y upon dx square, beta b ਨਾਲ b cancel, b minus a cos theta upon b sin square theta. So beta equal to 0 first derivative. So we have second derivative beta b minus a cos theta. So cos theta किसके इक्वल आ गया बेटा b minus a. First check point of inflection beta. So we have d square y upon dx square equal to b minus a cos theta upon b sin square theta बेटा. So mistake होगी बेटा, डबल डेरिवेटिव च बेटा पूरे मिस्टेक होगी बेटा मेरे विद रिस्पेक्ट टू एक्स का रहा ना थीटा का बेटा d थीटा अपॉन dx, d theta upon dx बेटा d theta upon dx 1 upon b sin theta. So we have v square sin cube theta. Okay बेटा we write this one b square sin square theta the power 3/2 b minus a cos theta equal to d square 1 minus cos square theta the power 3/2. ओके क्लियर है बेटा पॉइंट. यू नो बेटा ऑलवेज लेस देन 1 बेटा पॉजिटिव वैल्यू की चलाई कर दिया -1 to 1 बेटा a नॉट इक्वल टू b. सो ऑलवेज लेस देन 1. सो cos theta वैल्यू बेटा लेस देन 1. सो दिस वन इज वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव. फर्स्ट cos theta less than b upon a means a cos theta less than b. जे a cos theta b तो लेस है then डबल डेरिवेटिव की आ गया बेटा पॉजिटिव. सेकंड cos theta ग्रेटर देन b upon a. जे cos theta b upon a तो ग्रेटर है तो a cos theta किस तो ग्रेटर आ गया बेटा b. सो डबल डेरिवेटिव की हो गया पुत्र पहला वे नेगेटिव. So this one is a point of inflection. Okay, एक ही आ गया पॉइंट. अपने सीसा कैलकुलेट करना है. पुट इन 1. So x equal to a minus b into b upon a. So we have a square minus b square upon a. बेटा next example. Next बेटा show that बेटा next example. show that the abscissa means x of the point of inflection on the curve y square equal to fx satisfy the equation f dash x the whole square
इक्वल टू 2fx f double derivative x satisfy the equation beta. So beta abscissa is a point of inflection on the curve y square equal to fx. Okay, so y equal to root fx plus minus take positive sign dy upon dx first derivative 1 by 2 root fx into f dash x. Okay beta, then second derivative 1 by 2 denominator the square put denominator derivative of numerator minus numerator derivative of denominator. Okay beta, so LCM 1 by 4 fx into f double dash x minus f dash 2 भी आएगा बेटा f dash x the square upon fx the power 3 by 2. Okay, so d square y upon dx square equal to 0. Okay, जे इक्वल टू 0 होगा तो की आएगा मतलब 2fx f डबल डेरिवेटिव x माइनस f dash x the whole square equal to 0. So 2fx f double dash x equal to f dash x the whole square. Okay बेटा, so अपने प्रूव करना सिर्फ abscissa x है बेटा, इसनु की कर रहा है बेटा सेटिस्फाई कर रहा है. So ये अपने की करना सी बेटा प्रूव. सो बेटा थैंक यू वेरी मच. ट्राई बेटा एक्सरसाइज दे क्वेश्चन बेटा ट्राई करने. सो ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच.